Hello everyone, my name is Sharon Roshan from Trinity International School. Today we'll be learning poem. Chapter 2, Fable. Let's read the poem. It's all about squirrel and the mountains speaking to each other. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. What is prig? Someone who considers himself to be superior and better than others. प्रिग मतलब क्या होता है? जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा और समझदार समझता है बाकी लोगों से. बन ये स्क्विरल का नाम है इधर. बन replied, "You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together." क्या बोल रहा है स्क्विरल उसे? तू डाउटलेस है लेकिन काफ़ी बड़ा है. बट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, सारे वेदर्स को तू सॉर्ट आउट कर देता है. जब भी बारिश आता है, जब भी धूप आता है, जब भी हवा आती है. मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, क्या बोल रहा है? तो अपने आप में सारी चीज़ें अंदर लेता होगा. टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पीयर एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, मैं सोचता हूँ कोई डिसग्रेस नहीं है. डिसग्रेस मतलब समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, मतलब जिससे कुछ शर्माना. आई डोंट थिंक ये शर्माने वाली बात है. टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, वो बोलता है मेरी जगह लेने के लिए. इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, वो बोल रहा है मैं तुम्हारे जैसे इतना बड़ा नहीं हूँ. यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, वो बोल रहा है तुम मेरे जैसे इतने छोटे भी नहीं हो. एंड नॉट हाफ सो स्प्राई मतलब एक्टिव. वो स्क्विरल्स देखा ना आपने कभी भी उनके, कभी आप उन्हें पकड़ पाते हो? कभी मतलब हम देखते हैं और बोलते हैं चल इसे पकड़ते, लेकिन कभी हम उन्हें पकड़ नहीं पाते. क्यों नहीं पकड़ पाते? मतलब जो हंटर्स हैं वो लोग पकड़ पाएंगे, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोग अगर सोचेंगे अरे स्क्विरल को पकड़े, नहीं पकड़ पाएंगे. क्योंकि उन्हें आवाज़ आती है, हमारा स्मेल आता है, आवाज़ आता है, उसी से वो लोग तुरंत भाग जाते हैं. दे आर सो एक्टिव. आई विल नॉट डेनी यू मेक a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. क्या बोल रहा है कि you make a very pretty squirrel track. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. वो क्या बोल रहा है कि मैं अपने पीठ पे फॉरेस्ट लेके तो नहीं चल सकता हूँ तेरे जैसे, लेकिन फिर तू भी मेरे जैसे नट को नहीं तोड़ सकता. अखरूट जो होता है उसे तू भी मेरे जैसे नहीं तोड़ सकता. स्टूडेंट्स, नाउ you have to write the question answer in your notebook. Write question number A. Answer the following questions. Question number 1. Who is called a little prick? What does the term mean? You have to write the question from your textbook, and the answers is given here. First answer. The squirrel is called a little prig. A prig is a person who considers himself or herself superior to others. Write the second question. What makes up a year and a spare? Quote from the poem. But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. Right, question number 3. The squirrel acknowledged some qualities of the mountain. What were they? The squirrel acknowledged that the mountain was huge and could carry forest on his back. He also said that squirrel tracks looked very pretty on the mountain. Fourth question. What talents did the squirrel have with the mountain lacked? Answer was the squirrel was very active and could crack a nut. Question number 5.
Is the title fable suitable for this poem? Give reasons for your answer. This will be your homework. You have to write the answer by your own. Next is reflect and answer. Again, there is a homework for you. Do you agree with an idea that all is well and wisely put in the world? Give examples to justify your answer. So these 3 questions again will be your homework. Next, complete the summary of the squirrel's speech by filling the blanks. You can also use the words from the poem or their synonyms in the correct form. So let's fill in the blanks. The squirrel says that there is no doubt that the mountain is big, but it takes all sorts of things. But it takes all sorts of things in and weather to make a year and a spear. He does not find it a disgrace to occupy his own place in the world. The mountain is not as small and agile as the squirrel, while the squirrel is not as big as the mountain. The squirrel likes the pretty squirrel track on the mountain. It adds that the things in the world are disturbed wisely, just like it cannot carry forest on its back. The mountain is unable to break a nut. Now we'll learn I rhymes. Talent differs, all is well and wisely put. You can see put word is been highlighted here. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. You can see put and nut has been highlighted here, right? So why is that word is been highlighted? You can see only the difference of one letter is different. Put, put, nut, nut. But you can see the difference in the pronunciation. Put, nut, nut. Both look similarly, but the pronunciation of the both words are different. You will notice that put and nut are spelled similarly. Like I told you, spelling दोनों का same लग रहा है, लेकिन दोनों के pronunciation different है. Such words are called I rhymes. ऐसे words को हम क्या बोलते हैं? I rhymes, in which the words look similar but rhyme imperfectly. Many of these rhymes reflect historically changes in pronunciation, but sometimes poets deliberately use them for variation in the sound pattern. What is being said here?
समटाइम्स पोएट्स यूज़ इसे क्यों करते हैं, ताकि अलग वेरिएशन और डिफरेंट साउंड पैटर्न्स के कारण वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो देर आर सम वर्ड्स गिवन हियर. I rhymes for the following word. One has been done for you. We have to write another word. Watch, match. You can see only W has been changed. The letter W here and here M. So what will be the other word for laughter? Daughter. 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 What will be the third? Love. What will be the next word for the love? Move. Cuff. D. Rose. Loose. Wind. Kind. You can see all the pronunciation were so different from the given words. है ना, वो कितने डिफरेंट थे जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं उससे. सो नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू. नाउ यूज दिस आई राइम्स इन योर ओन सेंटेंसेस. रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज बोथ वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस. एक सिंगल सेंटेंस में आपको ये दोनों वर्ड यूज करना है. बेसिकली आपको, इफ आपने यूज किया लाफ्टर, तो लाफ्टर और डॉटर एक सिंगल सेंटेंस में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट द क्लॉक टू मैच द टाइम विथ हिज वॉच. कैन सी एक सिंगल सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स यूज हुए. वॉच एंड मैच दोनों वर्ड्स यूज हुए. सो यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस.